Hello dear students, good morning to one and all, and welcome back to the chemistry class. In the last class, just we have discussed about the introduction of the topic. Now I am moving to the next concept, that is rate of a reaction, class 12, chemistry. Unit 4. In this kinetics topic, we have discussed about the introduction. The next important concept, actually this is the first concept, rate of a reaction. Rate of reaction. So here rate, that means speed of a reaction. How we are going to express the speed of reaction? Because in this chemical kinetic topic, it mainly dealing with the speed of a reaction and the factors influencing on it, along with the mechanism of a reaction. So the first point is the rate. What is the definition? How you are going to define this rate of reaction? As you know that from the physics concept, speed is expressed as, might we know that the speed is expressed as distance traveled by an object, because speed of an automobile we are going to express in the form of distance traveled by it to the time taken. That means speed we are going to express as speed is equals to distance traveled by the object divided by time taken, time. In the same way, here we are defining the speed of a particular reaction. So as you know that reaction means, reaction में क्या रहता है? Reactant and product. तो उसका rate या speed हमको अगर predict करना है, in terms of concentration we are going to explain. So therefore, a rate of a reaction is expressed as, this rate of a reaction, it is a measure of change in concentration with particular time. It is a measure of change in concentration of either a reactant or product with time. It is a measure of change in the concentration of either reactant or product with respect to the time. So therefore we can define this rate of reaction as, rate of reaction may be defined as the change in the concentration of any one of the reactant or product with respect to time, or per unit time is known as rate of reaction. What is the definition? Rate of reaction, इसका definition क्या है? It is defined as, its definition is, it is defined as rate of reaction is defined as the change in the concentration of any one of the reactant or product, per unit time. This is the definition. Now in order to understand the definition, let us consider a hypothetical reaction. Now I am going to consider a hypothetical reaction. Reaction is considered.
hypothetical reactions where the reactants are converted into products. This is one simple reactions where the reactants are represented by R. This square bracket indicates the molar concentration and product P. Now, as you know that as the time changes, concentration of reactant क्या होते हैं यहाँ पर? Concentration of reactant decreases, whereas concentration of product increases. That means with the time, concentration of reactant क्या हो रहा है यहाँ पर? Suppose let's say when time is equals to T1, let's assume that its concentration is R1. And if we consider after some time T2, let us assume R2 be its concentration. And so here this concentration क्या होते हैं यहाँ पर? Go on decreases with time. Concentration decrease हो रहा है. Whereas when time is equal to T1, reactant का concentration R1 है, product का concentration क्या रहते हैं? Assume कर रहे हैं यहाँ पर P1 be the concentration at T1 and P2 be the concentration at T2. So here P1 to P2 concentration क्या हुआ है? Increases. Product का concentration increases. And about this, concentration of reactant decreases, concentration of product increases with the time. Time increase हुआ तो reactant का concentration decrease होगा और product का concentration क्या हो रहा है यहाँ पर? Increases. This is one point. We know that. So in terms of reactant and product, we can define the rate of reaction. Look at this. Rate of reactions is defined as change in concentration. Change in the concentration of any one of either reactant or product later. So therefore, the rate of reaction may be defined as rate of reaction is defined as change in the concentration of change बोले तो यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे हम change. ये भी करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बोले तो डिक्रीज हुआ है यहाँ पर. डिक्रीज इन द concentration of reactant. In short, I have written concentration of R. Decrease in the concentration of reactant to the time taken. Similarly, this can be written as in terms of decrease in the concentration of R. कितना decrease हुआ है देखिए यहाँ पर. कितना decrease हुआ है? Initially R1 है, final R2 है, तो final minus initial क्योंकि final कितना है और ये दोनों का difference में आ जाएगा हमको. Final minus initial R2 minus R1. In general I am writing as delta R, change in the concentration, or simply let us write as it is R2 concentration minus R1 concentration divided by T2 minus T1 time taken, or it is simply written as rate of reaction is change in the concentration of reactant with respect to change in time. ये reactant है, इसका concentration decrease होता है तो speed नेगेटिव में नहीं रहता है, लेकिन R2 का वैल्यू स्मॉल है, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है मैग्नीट्यूड, so for that I have taken an additional minus. So ये decrease in the concentration of reactant हुआ. In the same way, in terms of product, rate of reaction is defined as increase in the concentration of product divided by time taken. तो ये अपर डेफिनेशन है. इंक्रीज तो ये डिफरेंस है यहाँ पर भी. इंक्रीज कितना हुआ है? P2 का ज्यादा है P1 से भी, so P2 concentration minus P1 concentration divided by time T2 minus T1. So this can be written as delta P, change in the concentration of product divided by change in plus. ये इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस है, ये डिक्रीज है इसलिए माइनस है. So in general rate of a reaction is defined as can be expressed as
plus or minus dx by dt, plus or minus dx by dt. ये dx and dt actually first we'll consider dx and dt के जगह rate may be defined as rate of reaction is given by plus or minus delta x by delta t. A rate है. If the change in concentration is small, if delta tends to 0, if delta t tends to 0, इसका मतलब आपको पता है मैथमेटिक्स, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर टाइम लिया तो, so rate is given by rate is equals to plus or minus dx by dt. Infinitesimally small change, ये जो डेल्टा x है लार्ज चेंज रहता है, dx कंसीडर किया तो स्मॉल चेंज, where x is a given concentration of either reactant or product. This is about a rate of a reaction. Rate of reaction के बारे में एक्सप्लेन किया. Is it clear? Definition clear हुआ? Rate of reaction, speed of a reaction कैसा predict करते हैं हम? Speed. For example, so I have these are the some reactants. Let us assume that these are the reactants. कितना है मेरे पास? 1 2 3 7 reactants आ रहे हैं. So it is reactant. अब यहाँ से ये इधर आ रहे हैं. So ये reactant से product को आ रहा है. Reactants to product. Now initially when time is equals to t1, time t1 है, reactant का concentration कितना है? 7. Reactant का concentration 7 है. Product का concentration कितना है? 0. When time t is equals to initial time, when time is equal to 0, और यहाँ पर मैंने t1 बल्कि कंसिडर किया. So at a particular time concentration क्या है? Initial concentration of reactant is more, whereas product is 0. So this is the first case. When time increases, I am starting the reaction. तो reaction मैंने start किया. After some times देखिए एक reactant convert हो गया, दूसरा reactant converted into product, ये तीसरा reactant है, it is converted into product. So as the time increases at a particular time t2, तो अब reactant के कितना है? अभी reactant का concentration 4, initial कितना था? 7 था, अब कितना है? 4. तो क्या हुआ? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. 7 था, अब 4 है. concentration of reactant decreases. प्रोडक्ट के केस में फर्स्ट 0 था, अब 3 है, तो concentration of product increases. In any reaction as the time increases, reactant का concentration decrease होगा और product का concentration increases. So therefore rate is defined as rate of a reaction, speed of a reaction or velocity of a reaction is defined as decrease in the concentration of reactant with respect to time, नहीं तो increase in the concentration of product with respect to time. Same, decrease in the concentration of reactant with respect to time, नहीं तो increase in the concentration of product with respect to time. So in general dx, change in the concentration of either reactant or product divided by change in time. अगर change in time means at a fixed time हम consider किया तो small d use करें. d differential form, d by dt of x, d by dt of x, differential equation है ये, mathematics में आते हैं आपको differential equation. So dx by dt, infinitesimally small change in the reactant and product. So this is about the definition of a rate of a reaction, rate of reaction. Now let us express this rate of reaction in the graph, in graphical representation of rate of reaction को consider करेंगे. So how we are going to express this rate of a reaction in graph? So here rate of reactions is expressed as, ये देखिए, suppose if you plot a graph of a first graph है concentration versus time, concentration versus time graph है. This is the concentration axis, concentration of reactant and product का separate consider करेंगे with respect to time. Concentration of reactant with time. Time is increases in this direction. This is the coordinate. So concentration of, particularly हम कौन सा लेंगे? reactant लेंगे. Reactant concentration, ये reactant है. Now let us take the second graph, concentration of product
with respect to time. Concentration of product. Now, can we predict what is the nature of graph? ग्राफ कैसा रहता है यहाँ पर? ओके, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा रहता है, कुछ मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ऐसा कुछ मार्क किया है यहाँ पर. टाइम 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा, ऐसा कुछ मार्क किया. कंसंट्रेशन है यहाँ पर. कंसंट्रेशन इन मोलर टर्म्स 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा, ऐसा है. अब बोलिए हमको कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुआ होगा. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम t 0 है तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हम जितना भी लिया है उतना मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है. सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर है. सो आफ्टर 2 मिनट्स कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा. आफ्टर 4 मिनट्स concentration again decreases. Concentration decreases, 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 decreases. Concentration slowly decreases. So this is the nature of curve. Curve कैसा रहता है? Nature of curve. Reactant, in terms of reactant में अगर बोला decrease in the concentration of reactant, curve ऐसा आएगा आपको. Similarly, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंसीडर किया तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन, whereas this I have taken concentration of reactant. So in case of product, initial when time t is equal to 0, product तो कुछ भी नहीं है, तो product का concentration 0 है. तो product का concentration as the time increases, concentration of product 1 increases, increases, increases. ये curve ऐसा है आपको. Curve ऐसा है. So one is in terms of concentration of reactant and other is in terms of concentration of product. So this curve indicates product concentration. ये product concentration है, whereas this indicates reactant concentration. This is reactant concentration and that is product concentration. Okay, clear? Now, in rate of reaction there are two types. One is average rate of reaction and other one is instantaneous rate of reaction. Correct? देखिए नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, उसके बाद में डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सो ये दोनों को वर्डिंग ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा. इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, दोनों का मीनिंग आपको क्लियर है. एवरेज का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है. Am I right? आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट को? चलो देख लेते हैं वो भी. सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप कौन से भी टर्म्स लीजिए. लेट अस कंसीडर वन सिंपल एग्जांपल. एक सिंपल एग्जांपल्स लेंगे. अब हमारे पास 6 to 7 8 चॉक पीस है. अज्यूम कीजिए, एक जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं यहां पर. लेट अस अज्यूम वी हैव सम ऑफ द रिएक्टेंट्स whose concentration, one is ये टाइम है, time, and this is the concentration, time with concentration. Okay, now when time t is equals to 0, after after 5 minutes, after 10 minutes, after 15 minutes, after 20 minutes, मेरे पास इनिशियली 8 चॉक पीस है. 5 मिनट्स के बाद 6 चॉक पीस रहेगा, उसके बाद में 4 चॉक पीस एंड देन 3 चॉक पीस, बाद में 1 चॉक पीस. तो देखिए यहाँ पर 8 6 4 3 1 सब कौन से भी कंसीडर किया तो ये 2 0 भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. समटाइम्स फास्ट है, समटाइम्स स्लो है, वो आप बात कर. तो दिस इज टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन. वी हैव द डाटा. एवरेज तो मैं यहां पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. देखिए इन स्टार्टिंग 5 मिनट्स, स्टार्टिंग फर्स्ट 5 मिनट में मैंने 2 चॉक पीस यूज किया है यहां पर लिखने के लिए इनिशियली, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे पास 8 था, अभी 6 बचा है, तो कितना कंज्यूम हुआ 2 चॉक पीस आई हैव यूज्ड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में 2 चॉक पीस यूज किया मैं. टोटल इन 20 मिनट्स में कितना चॉक पीस यूज किया मैंने 7, राइट, बिकॉज फाइनली 1 इज रिमाइनिंग. or else at 25 minutes 0.
total 8 chalk piece I have used for writing on the board in 25 minutes. 25 minutes कितना? अब देखिए एवरेज, तो ये डाटा से हम ऐसा बोल सकते हैं I have used 8 chalk piece to explain a concept in 25 minutes. In 25 minutes. 25 minutes में 8 chalk piece यूज किया। तो 8 by 25 कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो लेट अस टेक स्टार्टिंग इनिशियली 10 कंसीडर किया भाई, तो 10 chalk piece इज यूज्ड इन 25 मिनट्स। सो कितना होगा? 5 2 जा 5 5 जा 2 by 5, 2 by 5 मींस 0.54 जा करेक्ट है यार। देखिए एक बार 20 by 4.4, इज इट राइट? 2 by 5 इज नथिंग बट 0.4। देख लीजिए एक बार 20 ओके 2 0.20 हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 ओके राइट 0.4 chalk piece, 0.4 means approximately 0.4 chalk piece is used per minute। 1 मिनट में, ये एवरेज 1 मिनट में मैंने इतना chalk piece यूज किया। लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग 5 मिनट्स में आई हैव यूज्ड 4 chalk piece। सेकेंड 5 मिनट्स में ओनली 2 chalk piece आई हैव यूज्ड। थर्ड 5 मिनट्स में ओनली 1 chalk piece आई हैव यूज्ड। नेक्स्ट 5 मिनट्स में 2 chalk piece इट इज यूज्ड, एंड लास्ट 5 मिनट्स में ओनली 1 chalk piece आई हैव यूज्ड। So at the different time intervals, I have used different number of chalk piece, but average कितना है? Average 10 by 25। टोटल मेरे पास 10 chalk piece था, 25 मिनट्स में खत्म हो गया। तो 25 मिनट्स में 10 chalk piece यूज किया, 10 by 25, तो पर मिनट उतना chalk piece यूज किया, 10 by 25, 10 by 25 0.4 पर मिनट। ये एवरेज chalk piece यूज किया, एवरेज है ये, एवरेज। इंस्टेंटेनियस अगर बोलना है, हाउ मेनी chalk piece आर यूज्ड एट द इंस्टेंट ऑफ 20 मिनट्स, 20th मिनट में एग्जैक्टली एट 20th मिनट हाउ मेनी chalk piece आई हैव यूज्ड। इंस्टेंटेनियस वो एक पॉइंट में, वो टाइम पे कितना chalk piece यूज किया, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट डायरेक्टली, करेक्ट है? नहीं तो वो जो एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से कॉलेज को आ रहे, हाउ यू आर कमिंग, आइदर बाय वॉक और बाय यूजिंग टू व्हीलर्स लेके कॉलेज को आ रहे। एट व्हाट स्पीड यू आर कमिंग टू द कॉलेज? कितना स्पीड पे आते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर। बाइक का स्पीड कितना स्पीड पे आते हैं? 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट स्पीड यू आर कमिंग? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज एंड योर होम, आपके घर और कॉलेज का डिस्टेंस कितना है? लेट अस से दैट इट इज 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर से, और आप कॉलेज को आने के लिए 10 मिनट्स ले रहे, 10 मिनट्स ले रहे। कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर है, कॉलेज टू होम, होम टू कॉलेज 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप कितना ले रहे हैं? 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए यू आर टेकिंग 10 मिनट्स। देन आपका स्पीड क्या हुआ? 10 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर मिनट। ये एवरेज हो गया आपका। लेकिन आप ऐसा नहीं, घर से बाइक लेके बाहर आते, आने के बाद कहूं तो आपके फ्रेंड के साथ खड़ा रहते, एक बार टाइम पास करते हैं 5 मिनट, तो वो 5 मिनट कंसिडर, 5 मिनट टाइम पास किया आपने, और दूसरे कहां तो जाके और एक 2 मिनट टाइम पास किया। विद इन 3 मिनट्स यू आर कमिंग टू द कॉलेज। So 10 kilometers, even though if you are traveling 10 kilometers in 3 minutes, but the average is 1 kilometer per minute. Average consider करते हैं। But instantaneous, what is the speed of your vehicle at the time of 3 minutes? 3 मिनट में अगर ट्रैफिक में है तो स्लो आते, अगर ट्रैफिक नहीं है तो फास्ट आते आप लोग। तो एवरेज इतना है। इंस्टेंटेनियस जब ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक में आप 1 किलोमीटर पर मिनट आ नहीं सकते, शायद आप स्टॉप किया होगा सिग्नल के टाइम पे। तो ये कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस एट द टाइम, एग्जैक्टली एट द टाइम, एंड टाइम t is equals to exactly some values. What is the rate? That rate is known as instantaneous rate. Instantaneous rate. So in order to find out that, so let us consider when time t is equals to, इतना से कुछ टाइम से कुछ कंसंट्रेशन भी है,
तो लेट अस देखिए यहाँ पर फर्स्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू समथिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट, दिस इज t1 बोल के कंसीडर किया एंड दिस पॉइंट इज t2, ये t1 है, ये t2 है. सो एट द पॉइंट ऑफ t1 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट है. सो एट द पॉइंट ऑफ t1 दिस इज द कंसंट्रेशन r1. नेक्स्ट एट द पॉइंट ऑफ t2, सो ये t2 का पॉइंट है, t2 कंसंट्रेशन इज r2 का r2. सो देयरफॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, average rate of reaction is given by change in the concentration of reactant by change in time. reactant है इसलिए माइनस ले रहे हैं, माइनस लिया है, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हुआ R2 माइनस R1. R2 का वैल्यूज कम है, R1 का ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस ओवरऑल प्लस आएगा. तो यहां पर R2 माइनस R1, R या और एक माइनस है, तो मैं shall I write R1 concentration by R2, or else directly you can use difference in the concentration of R1 by R2 divided by delta T. Delta T is nothing but what? T2 minus T1. तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो, एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट का कंसिडर किया तो so suppose if this is T1 and this one is T2, so T1 concentration of product, P1 का concentration at particular time T2, तो ये हुआ आपका concentration of P2. तो average rate of reaction is given by plus change in concentration of product by change in time, so that is equals to P2 minus P1 divided by T2 minus T1. तो ये हुआ आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ इफ यू वांट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, लुक एट दिस. आई वांट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ 5. ये इंस्टेंटेनियस चाहिए मुझे एट द टाइम ऑफ t. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज, सो यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा. दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है. So at this point, what is the concentration of reactant? ये instantaneous. लेकिन ये find out करने के लिए at this point you need to draw a tangent line. एक tangent line है ये tangent line का slope values निकालना पड़ेगा आपको. This is the tangent line drawn at the point where the given time I want to determine the concentration of reactant exactly at the instant of time t. तो इसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्लोप इज इक्वल टू एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं सर, एंड दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी. सो हियर स्लोप इज इक्वल्स टू ए बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी सी. सो इसका वैल्यू से समथिंग आ जाएगा. ये जो स्लोप है, दिस स्लोप इज नोन एज आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप लेते हैं. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सो देयरफॉर ये टर्म हुआ. सो आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज टेकन एज नेगेटिव स्लोप माइनस स्लोप. ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोडक्ट में आपको बोलना है एट द इंस्टेंट ऑफ सम टाइम t, सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रा करना पड़ेगा एंड टेक द स्लोप ऑफ दिस कर्व a b c. r instantaneous is given by slope, whereas slope is ab by bc. जो वैल्यूज आएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा. आंसर क्लियर होगा? यस, राइट. सो दिस इज अबाउट a rate of a reaction, definition, explanation in terms of graph, its type, instantaneous and average rate of reaction along with graphical representation. In the next class we will discuss about the differential equations, differential rate equations. Please note this concept.